स्वाति, पहले तो ये बताइए आपका मेंस एग्जामिनेशन कैसा गया था? अच्छा गया था सर। अच्छा गया था। होपफुल हैं आप रिजल्ट को लेकर के? जी जी सर। चलिए, वेरी गुड। सो स्वाति, काइंडली इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू द बोर्ड. Namaste sir, my name is Swati Tolambia. I am from Ajmer, Rajasthan, and I have completed my BA LLB from Modi University, Lakshmangarh, and LLM in Criminal Law from Maharishi Dayanand Saraswati University, Ajmer. Currently, I am preparing for Rajasthan Judicial Services and also practicing in Districts and Session Court, Ajmer. Okay, so जुडिशरी आपका प्राइम ऑब्जेक्टिव है कि एडवोकेसी लिटिगेशन में जाने का प्राइमरी गोल था? So my primary and foremost and the end goal is judiciary itself, but because there was no upcoming vacancies from the past 2 years, that's why I decided to join the court so that I can gain some practical knowledge also. तो आप कोर्ट में आपने क्या सीखा प्रैक्टिकल नॉलेज में? Yes, sir, I am currently practicing as a criminal advocate only. I have learned some of the learnings about pleading as well as drafting in the court. You are criminal advocate or advocate in the criminal side? I am an advocate in a criminal side, sir. You are not a criminal? No, I am not a criminal. Then why you are saying you are criminal advocate? Yes. ने स्वाति क्रिमिनल लिटिगेशन अगर प्रैक्टिस किया है तो इस प्रैक्टिस में आपने किन मैटर्स में प्लीड किया? हैव यू प्लीडेड बिफोर द कोर्ट? Yes, sir. I have pleaded and I have won for my clients also. Some of the cases, like in theft cases and in simple hurt 323 IPC and 341 IPC also. Okay, what were the matters? So one of the matter in theft cases was that there were 3 of the accused who were alleged to have stolen mobile phone Nokia 1200 from a house in the night. But because there was no marking on the phone when it was seized by police under Section 27 of Evidence Act, so I took the plea in the court that because there was no identity of the products which are being stolen, then the accused cannot be convicted for that purpose, and thus the Honorable Court also gave them acquittal on the basis of the conviction was not proved beyond reasonable doubt. Any specific case law that you can recall from Section 27? Yes, sir. Recently, the Honorable Supreme Court has given Manjunath versus State of Karnataka judgment in which it was said that whenever any recovery is being made from a public place, it shall not be considered as a recovery or information which leads to discovery of any object in under Section 27 of Evidence Act. Okay. And Swati, have you completed your LLM? You're done with your LLM? Yes, sir. I have completed my LLM in this June only. Okay. What was the topic of your dissertation? Sir, I didn't opted for the dissertation. There was an option to opt for an optional subject examination, so I opted for that because I had my judicial service exam. Okay. Okay. And your area of interest, I suppose, is criminal law? Yes, sir. Okay. Over to Mittal, sir. Thank you. Swati, you are already an advocate and are in the journey of becoming a judge. So what are the basic requirements of a judgment under the Code of Criminal Procedure? So Section 353 of the CRPC talks about the same, that in a judgment, first and foremost is the facts of the case. Second is the point of determination, which is to be decided. Third is the prosecution evidences. Then a statement given by the accused under Section 313 of the CRPC. And then if any defense evidence is there to be included, then the arguments of both the sides, and then the final decision, reasons upon that decision, and the order, and the superseded by the quantum of punishment to be decided by the to my opinion, you have included some other aspects and have left one aspect, language of the court. What do you mean by the language of the court? So as far as I can recall right now, language of the court should be simple so that the person accused can understand what punishment or what acquittal he has been awarded by the court if in the case. Sorry, you are wrong. Language of the court means, as you know, that
There is language of the state and language of the nation, and there are various languages which are Yes, sir. accepted under the Constitution of India. Yes, sir. And for Rajasthan, I think the Hindi is the language of the Yes. court. Yes. For UP, Hindi is the language of the court. So that is the language of the court, Okay, sir. which should be considered. Okay. Okay. Now, you started your sentence that you are practicing in district and sessions court. What is difference between a district judge and a sessions judge? Sir, district judge is mainly the judge who deals with civil cases as per the law. When we bifurcate between civil and criminal law, the ones who deals with the criminal cases are known as sessions judge, and the one who deals with civil judgments or civil cases is known as district judge. Excellent answer. Excellent answer. Very good. You belong to Ajmer. Yes, sir. For which aspect it is famous? Apart Sir. from Dargah Sharif. Apart from Dargah Sharif, for what other things it is famous? Sir, Ajmer is famous for many other things apart from Dargah Sharif. First and foremost is Pushkar, a city located in the Ajmer only, which is a holy place considered in Hindu mythology. Wherever there is only one of world's only one Lord Brahma temple is there in Pushkar. Apart from this, there are many other aspects like Britishers took the permission from Jahangir in Ajmer only to start their business in India. Okay, excellent. Now, as you know that you have completed your LLM and you are pursuing for the judicial examination and practicing law. Okay. We all know that Constitution of India was accepted on 26th 11/1949. Yes. But it was implemented on 26th of January 1950. Why it took 2 months? What was the reason? Sir, the reason I can recall is that on 26 January 1930, our freedom fighters declared India on that they want Swaraj, and to recognize that day in the history, they Sorry. I'm not asking about the importance of the 26th January. I'm asking about the gap of 2 months when we adopted the Constitution on 26th November 1949 and we implemented it on 26th January 1950. Why there was a gap of 2 months? Sorry, sir, I cannot recall it right. The answer may be that under the Constitution, various authorities were to be constituted, various appointments were to be done, various courts were to be established, for example, Supreme Court and the High Court, the President of India, the other constitutional authorities. Okay, so whenever such things are necessitated, then certainly the implementation of the Act may be partial, may be full, immediately, or may be postponed for future date. This was the reason. You see, there are various legislations which are not enforced immediately. Some time gap is taken because various authorities have to be appointed, various rules have to be framed regarding the procedure, how the proceeding shall be done. So various aspects have to be done. Okay. What do you mean by division bench? So division means wherever there are two judges in a bench to deal with a case, it is called as a division bench. And what about full bench? Full bench, as per the Constitution, is 5 judges bench is known as full bench or constitutional bench. No, there is difference between full bench and the constitutional bench. The full bench may be of more than 2 judges, but the constitutional bench shall not be less than 5 judges. Okay.
as you are a practicing lawyer, if meaning of some word is not provided in the particular enactment, how will you search meaning, legal meaning of that word? So firstly, I will look for General Clauses Act. Yes, If very good, very good. if the word meaning is not provided in there also, I will look for some cases. No, I got my answer. You know about General Clauses Act. There are two General Clauses Act. One is of 1895, and when that General Clauses Act was enacted in the state of Rajasthan, So I'm not aware of it. there are two general clauses always. As in UP, it was enacted in 1905. So the central legislation has to be dealt with General Clauses Act of 1895. And the meaning or the interpretation of the state legislation has to be done as per the State General Clauses Act. Okay. Can you tell me what is provided under Article 21 of the Constitution? Article 21 of the Constitution provides that no state shall deny any person right which infringes No. Restart. Sorry. No state shall deny. Sir, can I speak in Hindi? Yes, very well. पर्सनल लिबर्टी को बिना प्रोसीजर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के स्टेट डिनाई नहीं कर सकता किसी भी व्यक्ति को बिना ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ अंग्रेजी में बता दीजिए उसमें क्या बताया है। ये तो बड़ा ये तो ऐसा आर्टिकल है जिसको कि बिल्कुल जवान पर रखना चाहिए। राइट नाउ आई कैन नॉट रिकॉल इट। ओके व्हाट डू यू मीन बाय GDP? So GDP is gross domestic product. It is calculated as per the total income of total product being produced in the country and the total population of the country. And what do you mean by fiscal deficit? As far as I can recall, fiscal deficit is whenever the expenditure in the country is more than its revenue. That situation is called as fiscal deficit. What do you mean by the dying declaration? Section 32 of Indian Evidence Act, Clause 1 talks about dying declaration. It says that whenever any person is dead, any statement made by him formally as to the cause of his death or circumstances which resulted in his death will be relevant, and that statement is called as dying declaration. And if the person who has made the dying declaration is alive, then what shall be the importance of that dying declaration? Statement. If the person is alive, it shall be used under Section 157 of Indian Evidence Act for the corroboration of its previous statement with the present statement. Very good. What do you mean by preliminary degree and final degree? Sir, in Civil Procedure Code, two types of decrees are provided. Preliminary decree is a decree wherever there is an adjudication upon a preliminary point, but the final adjudication of a suit is pending. Example, in the suit for possession and mean profit, preliminary decree may decide up to whom the possession will go, but the mean profit will be calculated and decided in the final decree. And the partition suits. Yes, also, yes. Partition suit. In the partition suit, firstly, the share of each of the claimant will be decided, and subsequently, it shall be decided that to which portion or which part the possession must be given. Very good. You are answering all the questions excellently and with a great confidence. Thank you, sir. And I should say that you are lucky enough to belong to Rajasthan itself, and you are also having the practical knowledge by practicing in the court. And may I ask one more question? Yes, sir. What is gambling? So what is? Sorry. Gambling. Gambling. Online gambling. Yes, sir. Or gambling.
So gambling, if we talk about in legal terms, it is a sort of wagering agreement whereby the person contracts on the basis of mere chance of winning or losing a particular thing, and it is void. These are void contract as well as illegal as per Indian laws. No, I'm not asking about in the background of Contract Act. I'm asking in the background of criminal law. Suppose 4 persons are playing cards. How the investigating officer or the judge shall decide that they were gambling or not gambling? So Certainly money is also involved. yes, sir. Money is also involved. Four persons are playing cards or Ludo or chess, whatever it is. So how do you decide that it's a gambling or not a gambling? For the purpose of deciding whether that particular transaction is gambling or not, the judge will see as to that transaction involves any skill to be done, skill or not, no skill is required. Very good. I should congratulate you that you are answering all the questions to the point. Thank you, sir. The right answer is that if the preponderance is towards skill, it is not gambling. If the preponderance is towards chance, mere chance, then it is gambling. Okay. Anup sir. Yes, स्वाति, आप जैसा कि अजमेर से बिलोंग करते हैं जी सर, और वहीं पर ही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं, राइट? जी सर। अभी बहुत फेमस केस आया था और बहुत पुराना केस है, बता सकते हैं गैंग रेप से संबंधित है? जी सर, ये 1992 अजमेर गैंग रेप कांड का केस है, जिसके अंदर 1992 में कुछ अभियुक्तों ने मिलकर कुछ स्कूल गोइंग और कॉलेज गोइंग लड़कियों को में से एक को सबसे पहले रेप करा, उसकी फोटोज क्लिक करी और फिर उसे ब्लैकमेल किया कि उसे और भी अपनी फ्रेंड्स को लाना है, और इस तरह से चेन बनाकर बहुत सारी विक्टिम्स को उन्होंने अपना शिकार बनाया। और उसके बाद में इसमें मीडिया में भी बहुत ज्यादा इसकी खबर आई, और उसके बाद में जब ये केस चला तो अब इवेंचुअली जाकर इस साल अगस्त 2024 में पोक्सो कोर्ट ने जो लास्ट 6 अक्यूज थे उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट की पनिशमेंट डिक्लेयर की। इसमें जो मेन कल्प्रिट थे जिनको शायद छोड़ दिया गया, ऐसा कुछ है क्या? कुछ आप जानते हैं उसके बारे में, वो भी बताइए। जी सर, इसमें से कुछ अक्यूज थे जो इवेंचुअली 2002 के अंदर पुलिस को मिल गए थे और उनके अगेंस्ट ट्रायल शुरू हुआ था। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उन्हें कन्विक्ट किया था, बट उन्हें हाई कोर्ट से अक्विटल मिल गया और फिर वो वहां से छूट गए। नहीं, जो सबसे मेन अपराधी था, जो अनसाउंड माइंड का ग्राउंड देकर छूटे थे, उनके बारे में आपने नहीं बताया। उनके बारे में आप जानते हैं? सर नहीं, मैं इस बारे में इसको स्टडी करिएगा। अच्छा, गैंग रेप की बात चल रही थी, कैन women be prosecuted for the offense of gang rape? No sir, a woman cannot be prosecuted for the offense. Even in POCSO Act? In POCSO Act she can be prosecuted. Okay. अभी आप राजस्थान में अजमेर से हैं, जोधपुर कभी आए हैं? जी सर। क्या जानते हैं जोधपुर के बारे में? सर जोधपुर फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी जुडिशियल कैपिटल कहलाती है, क्योंकि हाई कोर्ट जो है वो जोधपुर में ही है। इसके अलावा जोधपुर को राजस्थान की कल्चर के हिसाब से देखा जाए तो इसे मारवाड़ क्षेत्र माना जाता है, और यहाँ पर डेजर्ट एरिया भी कह सकते हैं हम, क्योंकि जोधपुर के अंदर डेजर्ट एरिया माना जाता है, और वहां से एक थार डेजर्ट जो है उसकी शुरुआत हो जाती है जोधपुर। और बाकी एरिया में डेजर्ट नहीं है जोधपुर के अलावा? जी सर है, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, सब जगह डेजर्ट है, राइट? जी सर। अच्छा, एक ये मेरा प्रश्न था आपसे कि आप राजस्थान में जो पानी की कमी है उसके लिए आप क्या करना चाहेंगे? अगर आप जज बन गए कि भाई पानी का शॉर्टेज है, ज्यादा रहता है वाटर शॉर्टेज, तो आप क्या अपनी तरफ से एफर्ट लगाना चाहेंगे भाई कि आप एक अच्छी पोस्ट पे जा रहे हैं? व्हाट विल बी योर एफर्ट्स? क्योंकि आप जानते हैं कि हमारा जो राजस्थान है पूरा एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज्यादा अवेयर है ना? तो आप क्या करना चाहेंगे राजस्थान के लिए कि हम वाटर सप्लाई की कमी जो है उसको पूरा किया जा सके? सर एज अ जज
क्योंकि मैं एक पोजीशन पे होंगी तो शायद मैं आर्टिकल्स और जर्नल्स लिख के गवर्नमेंट को अवेयर करा सकती हूँ अपने आइडियाज के बारे में। और वाटर को की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो मेरा सबसे एक इम्पोर्टेंट आइडिया है कि हमें जो रेन वाटर जो कंजर्वेशन है उसके ऊपर राजस्थान को बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए, जिसकी हमारे स्टेट में बहुत ज्यादा कमी है। और क्योंकि इस बार हमने देखा कि बारिश बहुत ज्यादा हुई थी और उस वक्त अगर हमने रेन वाटर सिस्टम अच्छा होता है स्टेट में तो हम बहुत क्यूबिक मीटर्स ऑफ वाटर को सेव कर सकते थे, जो आगे फ्यूचर में हमारी स्टेट के लिए हेल्पफुल रह सकता था। तो ये मैं एक गवर्नमेंट को सजेस्ट कर सकती हूँ एज अ जज। और उसके अलावा जो हमारे इंदिरा गांधी नहर है उस तरह का प्रोजेक्ट हम और इंट्रोड्यूस कर सकते हैं राजस्थान के अंदर। और जो ईस्टर्न राजस्थान का एरिया है जहाँ पर पानी की ज्यादा कमी पानी है क्योंकि वहां पर रिवर्स का कनेक्शन है, चंबल और उसकी ट्रिब्यूटरीज, तो वहां से वाटर को सेव करके बाकी वेस्टर्न पार्ट्स में पहुंचाने के लिए भी गवर्नमेंट एफर्ट कर सकती है सर, और उसके लिए सजेस्ट। क्या 4 लोग मिलकर डकैती कर सकते हैं? जी नहीं सर, 4 लोग मिलकर डकैती नहीं कर सकते, वो रॉबरी कहलाएगी। कौन सा अपराध कर सकते हैं वो रॉबरी कहलाएगी सर। रॉबरी कहलाएगी, ठीक है। थैंक यू स्वाति। आशुतोष सर। स्वाति, अभी रॉबरी एंड डेकॉइटी से स्टार्ट करते हैं। सपोज राजस्थान में एक व्यक्ति है, 3 व्यक्ति है मान लेते हैं, या 4 व्यक्ति है, उनको एक ऑफेंस के लिए कन्विक्ट कर दिया गया एंड द ऑफेंस वाज ऑफ थेफ्ट। लेटर ऑन क्या उनको ऑफेंस ऑफ रॉबरी या डेकॉइटी के लिए कन्विक्ट किया जा सकता है? सर डेकॉइटी अगर 5 लोग प्रूव होते हैं तो उन्हें डेकॉइटी के लिए कन्विक्ट किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर डेकॉइटी जो है वो कोर्ट ऑफ सेशन ट्राई करता है, इसीलिए सेक्शन 300 ऑफ सीआरपीसी के अकॉर्डिंग उनकी रीट्रायल हो सकती है। बट रॉबरी क्योंकि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ही ट्रायबल है, तो उस मामले में रॉबरी के लिए वो ट्राई नहीं कर सकते। ओके, गुड। जैसा आपने बताया कि आप राजस्थान से हैं स्वाति, एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल राजस्थान की जयपुर है। जी सर। आपको क्या लगता है रीजंस क्या हैं जोधपुर को एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल ना बनाने का? सर जोधपुर को एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल इसलिए नहीं बनाया गया क्योंकि दिल्ली से पहले अगर हम ज्योग्राफिकली लोकेशन देखें तो वो जयपुर की ज्यादा पास है जोधपुर से। दूसरा है जोधपुर का ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू कि जोधपुर जो है वो डेजर्ट एरिया में ज्यादा आता है, जिसकी वजह से वहाँ रिसोर्सेज और पॉपुलेशन की भी उतनी पॉपुलेशन नहीं है जितनी जयपुर के अंदर है। और जो जयपुर की जब बसाया गया था उसकी कल्चरल हिस्ट्री को देखते हुए भी और जो ब्रिटिशर्स थे या जो पहले ब्रिटिशर्स से पहले मुगल एरा था उसमें भी जोधपुर के अंदर ज्यादा, जयपुर के अंदर ज्यादा फोकस रहता था, इसीलिए जयपुर को एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल बनाया गया राजस्थान। करेंट जो बाउंड्रीज हैं राजस्थान की, ये बाउंड्रीज कब बनी थी, यानी कौन से रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत ये बाउंड्रीज फॉर्म हुई? सर राजस्थान का यूनिफिकेशन वैसे तो 7 स्टेजेस में हुआ था, बट जो करंट बाउंड्रीज है वो 7th स्टेज में कंप्लीट हुई थी और वो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 से पूरी तरह से बनके आज का ओरिजिनल राजस्थान फॉर्म हुआ। ओके, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटीज क्या क्या है राजस्थान में? राजस्थान के अंदर कुछ एरियाज में अलग अलग लिंग्विस्टिक वो है, जैसे शेखावटी रीजन जो है सीकर, झुंझुनू, चूरू, वहां पर बांगड़ लैंग्वेज का यूज किया जाता है। इसी तरह से हाड़ौती रीजन है जहाँ पर हाड़ौती रीजन के अंदर डांग भाषा होती है वो यूज की जाती है। मेवाड़ के अंदर वागड़ भाषा का प्रयोग ज्यादा किया जाता है और मारवाड़ और मेवाड़ में मारवाड़ी भाषा का ज्यादा प्रयोग किया जाता है। जिस ऑफेंस का कमीशन 1 जुलाई से पहले हुआ है, 1 जुलाई 2024 से पहले, उस ऑफेंस के लिए एफआईआर रजिस्टर सीआरपीसी में होगा या बीएनएसएस में होगा? सर एफआईआर रजिस्ट्रेशन जो है वो सीआरपीसी में होगा 1 जुलाई 2024 से पहले के मामले। ओके, और ट्रायल भी सीआरपीसी में ही चलेगा? जी सर, ट्रायल बीएनएसएस में चलेगा क्योंकि जो इन्वेस्टिगेशन के बाद चार्जशीट पेश होगी वो तो सीआरपीसी में होगी, पर जो मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेगा वो बीएनएसएस में लेगा। बीएनएसएस में लेगा, जी सर। ओके। बीएनएसएस में हमने एक चीज और देखी कि मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट का प्रोविजन हटा दिया गया। क्या रीजन हो सकते हैं इसके?
Sorry, sir, I cannot recall it right now. Okay, fine. स्वाति, हॉबीज क्या हैं आपकी? Some मेरी hobbies है reading short stories from magazines and newspapers and as well as solving Hindi crosswords. हिंदी क्रॉसवर्ड्स? जी sir. ओके, सो रिसेंट आपने कौन सी शॉर्ट स्टोरी पढ़ी है? सर रिसेंटली मैंने लास्ट संडे को न्यूज़पेपर में आई थी मीनाक्षी वर्मा जी की स्टोरी महिला को एक दिन की छुट्टी, वह पढ़ी है। उसके अंदर एक घर की जो महिला होती है, हमारी माताएं जो घर में रहती है, उनको किस तरह से एक दिन की छुट्टी की इच्छा होती है पर वह भी नहीं मिल पाती है घर के कामों से, और उसमें परिवार के सहयोग से वह वो कुछ घंटों का जो आराम है वो कैसे एक्सपीरियंस कर पाती है, उसके बारे में वह स्टोरी। ओके, स्वाति, बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में एक वुमेन के लिए स्पेसिफिक लीव होती है जो वो ले सकती है महीने में एक दिन कभी भी, जिसको हम पीरियड लीव कह सकते हैं, या जो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स के टाइम पे वो ले सकती हैं अपने। तो ये लीव आपको लगता है कि गवर्नमेंट सर्विसेज में भी अप्लाई हो जानी चाहिए एज अ कोर्ट? जब हम बात करते हैं तो फीमेल जजेस जितने हैं और फीमेल एम्प्लॉयज जितने हैं, क्या उनको भी ये बेनिफिट मिलना चाहिए? सर मेरे अकॉर्डिंग पीरियड लीव्स होनी चाहिए, बट इनके अंदर हम कुछ गाइडलाइंस इशू कर सकते हैं कि जैसे जिन महिलाओं को इतना दर्द नहीं होता हो पीरियड्स के अंदर, वह आ सकती है ताकि वर्कलोड ज्यादा दिक्कत ना हो, क्योंकि ये एक रेगुलर प्रोसेस है और हर मंथ में 5 छुट्टी वर्कलोड पे भी इफेक्ट करती है। इसलिए गवर्नमेंट में ये चीज इंश्योर की जा सकती है, बट इसमें एक पर्सनल गवर्नमेंट कह सकती है कि जो महिलाएं काम कर सकती है वह आए, और जिनको ज्यादा तकलीफ होती है वह छुट्टी ले सकती है, और उसके दौरान भी ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया कैसे बनेगा? मतलब इसमें तो सारी वुमेन कह सकती हैं कि वी सफर, एंड जो है फिर वो प्रैक्टिकलिटी क्या होगी इसकी? सर इसके अंदर सबसे पहले तो जो एम्प्लॉय है, विमेन एम्प्लॉय, उसकी खुद की इंटेग्रिटी और ऑनेस्टी सबसे बड़ा टेस्ट है कि वह अपने काम को लेकर कितनी ऑनेस्ट है। और सेकेंडली जो इंश्योर कराने की बात है, उसमें मेरे को ऐसा लगता है कि हम वर्कलोड को या तो डिवाइड कर दे कि जिस दिन वो नहीं आ रही है वो इंश्योर रहे, क्योंकि एक तरह से साइकिल फिक्स रहता है कि इन पर्टिकुलर डेज में होगा, तो कि उस टाइम वर्कलोड उन पे कम दिया जाए, ताकि अगर वे आए भी तो इतना काम ना हो, जल्दी जा सके। या फिर घर से जैसे वर्क फ्रॉम होम प्राइवेट ऑफिसेज में कराया जाता है, हम कुछ गवर्नमेंट ऑफिसेज में भी इसको इंश्योर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू स्वाति। ओवर टू शुभम सर। सो स्वाति, आप लिटिगेशन कब से कर रहे हैं? सर सिंस February 2022। February 2022, मतलब लगभग 2 साल के ऊपर हो गया है आपको, 2-2.5 साल। You are a very knowledgeable advocate it seems, क्योंकि आप इंफॉर्मेशन आपके पास है, काफी ज्यादा जीके भी आपका वेल प्रिपेयर्ड है। Why are you not going to pursue litigation itself? आपका 2.5 साल का एक्सपीरियंस हो गया, जुडिशरी में क्यों आना चाहते हैं? You might have a very good career even in litigation. Sir, in these past 3 years, I have realized that being a first generation female lawyer, it is very difficult to pursue litigation as a career, because this involves a lot of field work involving with the clients, making contacts, and which I find that these are some points which are difficult for me to always contact. You can create your own legacy. Why do you wish to join judicial services? You can be a very good advocate on record. I sense this. I very much sense this, that you can be a very good advocate on record. Why going for judiciary? You might be wasting your talent. No, sir. I think my talent will be more utilized as a judge, because I know that first and foremost thing, that social and economic perks attached to being a judge are not with that of judiciary litigation. And it is quite difficult to pursue it economically if we see the present scenario. Okay, so just one last question. Let's say you become a judge. Be happy about the fact that you will be becoming a judge. Right. And you get a posting later on in your age, in your life, you get a posting somewhere wherein any of your contacts come to plead before you, because in last 2.5 or so many years you must have made certain contacts, certain links.
So when you will be a presiding officer somewhere, there is a very good possibility that you might be getting somebody who's a pleader and who's known. How will you be balancing out your terms with that particular pleader along with your job as a judicial officer? Being a judge, the first and foremost responsibility is that I should be impartial and non-biased towards anybody standing in front of me as an advocate, be it a senior most counsel I would have worked with, or be it a fresher. It is my responsibility to always look the evidence on record and decide the case as per the evidences only, instead of going with the person who is standing in front of. Okay. Once you get selected as a civil judge in Rajasthan Judicial Services, you will be becoming a court of judgment or a court of justice? I think court of justice. Are you sure? Think about it. Take a moment. Take a few seconds. Will you be becoming a court of judgment or a court of justice? Sir, as per section 19 of IPC, I think I will be a court of justice because I will be authorized to give a definitive judgment. 90 of IPC. 19. 19 of IPC. So you will be becoming a court of justice. Yes, sir. So is IPC applicable now or is BNS applicable now? In the the cases which will be dealt as per IPC, because they were filed, or I will be Now what will be applicable, BNS or IPC? BNS. So do you have the definition of court of justice under BNS? No, sir, not right now. What definition is there? As per IPC, I can tell, but not as per BNS. You will be becoming a judge. You will be dealing with BNS. Then kindly tell me, is there a definition of court of justice in BNS or not? Just say yes or no. No, it surely there will be, but I cannot recall it right now. Okay, there is no definition of court of justice in BNS. Remember this, there is only the term court that has been defined in BNS. Okay, good job, Swati. Well done. Very well done. I'll take a lead in terms of the feedback first, sir. मैं feedback पहले provide कर देता हूँ, with your permission. So Swati, दो तीन चीजें जो मुझे लगी, apart from the knowledge thing, राजस्थान की जीके पे आपकी कमांड अच्छी है. It's good, commendable है. You're very good in terms of expressing and explaining the board. आप explain कर पा रहे हो, language आप proper use कर रहे हो, words आप proper use कर रहे हो. There are no unnecessary fumblings that I could note, क्योंकि मैं सभी students का एक पूरा लेके चलता हूँ, रिकॉर्ड बना के चलता हूँ. There were no unnecessary fumblings. एक चीज जहां पे मुझे लगा कि it was not expected. Article 21 सर ने आपसे पूछा, and you twice you made this mistake by saying कि no state shall deny. You mixed Article 14 and 21, yes, sir. And Article 21. तो वो बस एक ही फंबल आया, otherwise there was no problem. Next, एक चीज मैंने नोटिस की है, and I don't know if it was deliberate. Sir asked you a question regarding enforcement of the Constitution, 26(11) and 26(1). Yes, sir. Question was very clear in terms of enforcement. Why did it took 2 months to get enforced? Yes, sir. But I don't know whether you wanted to dodge it or what. No, sir. Went towards the historical aspect of the date. So कोशिश कीजिएगा कि जो क्वेश्चन जिस प्रकार से पूछा जाए उसको उसी प्रकार से आंसर कीजिएगा. Sure. Okay. एंड एक और चीज, बस ये आखिरी है 3 ही पॉइंट से, कि whenever you are wrong, मतलब I have created a box specifically for that. Whenever you are wrong, you are nodding a little too much. उसका थोड़ा सा ध्यान रखना बेटा. A little bit of caution on your part will make it look even more presentable. Okay, sir. Smile proper carry कर रहे हो, बहुत ज्यादा giggle नहीं कर रहे हो. Everything, every part of your demeanor is very good. बहुत ऑन पॉइंट है. छोटी छोटी जो बेसिक डिटेल्स है इनको ध्यान रख लो. और वो लिटिगेशन और ये जुडिशरी के लिए ट्राई फ्रेमिंग अ बेटर आंसर, क्योंकि आपको फंसाया जा सकता है क्योंकि आपका एक्सपीरियंस 2.5 साल का हो गया. ठीक है, वेल डन, गुड जॉब. थोड़ा सा मैं एक और बता दूं. You have done excellently, no doubt. And because you are also a practicing lawyer, you know that how to enter a courtroom and how to leave the courtroom. The same fundamental has to be applied before the interview board. Okay, sir. When you enter the
room, you slightly open the door and take permission. May I come in, sir? And then you enter the room. You then take your chair. Unless you are asked to sit, please don't sit. And if the distance of the chair from the table of the board is too much, तो कुर्सी को घसीटे ना, उसको उठा करके नजदीक कर लें, पहली चीज। दूसरी चीज ये, बिकॉज यू आर ऑलरेडी ए प्रैक्टिसिंग लॉयर, जब भी आप कोर्ट को छोड़ते हैं तो आप चेस्ट पे हाथ रख करके थैंक यू माय लॉर्ड या थैंक यू सर आप बोलते हैं। सेम आपको जो है इंटरव्यू बोर्ड के सामने भी जब आपका इंटरव्यू खत्म हो जाए तो थैंक यू सर, और 2-3 कदम सेम पोस्चर में, यानी फ्रंट पोस्चर में, बैक में नहीं, जैसे कोर्ट में भी आप करते हैं। पीछे नहीं जाते हैं, पीछे 2-3 कदम चल, हाँ पीठ नहीं दिखाते, 3-4 कदम पीछे सेम पोस्चर में चल के और फिर वो करके और तब आप बाहर निकलते हैं। एंड आई एम 100% कॉन्फिडेंट you shall be selected. Thank you so much, sir.